ਹੈਲੋ ਵਿਨੋਦ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, PPT ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਅੱਛਾ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੋਰਡ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਬੋਰਡ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂ। ਓਕੇ, आ जाओ बाबू जी। ओके, तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स. I hope you all are well at home, and let's start the next topic, that is RSA algorithm. Okay, and it is the example of asymmetric key. We have studied about the asymmetric key in the last lecture, and RSA is the example of this. Okay, in RSA algorithm, in asymmetric key, we have two keys. One is private key and second is public key. Okay, now the public key is accessible by everyone, but the private key, that is secret to that particular person. Okay, if A and B wants to transfer data between, if A is the sender and B is the receiver, if A use the public key of B to send the data, then B can encrypt that data, decrypt that data by use its private key. Okay, if A sends data by using its private key, then B decrypt that message by using A's public key. And there are different scenarios where we use these concepts, where A use its public key, or you can say where B use its public key. Okay, there are different scenarios. Okay, we discuss in next topic what are various scenarios where the sender use the public key or sender use the receiver key. Okay, but now in this topic we discuss about RSA algorithm, and RSA algorithm use public and private key to send the data. Okay, to transfer the data. Okay, so let's start RSA algorithm. The name RSA is from the scientist name. Okay, R means Rivest, S means Shamir, and A means Edelman. Okay, the first letter of these names is the RSA algorithm. Clear? So Rivest, Shamir, Edelman is the name who develops the RSA algorithms. Clear? In RSA algorithms we have basically three steps. One, and it is developed in 1978. 1978. Okay, RSA algorithm is developed by Rivest, Shamir, Edelman in 1978. Clear? Okay, and it used the concept of public and private key. Public and private key. It used the concept of public and private key. Means RSA algorithm use the concept of asymmetric key, where we have pair of keys. Okay, and the next, RSA also use blocks of plain text. It also use the blocks of plain text. Clear? Now in RSA algorithm we have basically three steps. The first step is key generation.
The first step is key generation. Second step is encryption. And third step is decryption. Clear? In RSA, we have basically three steps. One is the encryption, where we create public and private key. Second step is the encryption. Using these keys, we encrypt data. And the third step is to decrypt the data. Clear? These are the basic three steps of RSA algorithm. Let's explain these steps one by one. Okay, the first step is key generation. In key generation, we have various steps for creating a key. In this case, first, we take two large numbers. Select two large numbers, P and Q. Here, we select two large numbers, P and Q. And these numbers should be prime. These numbers should be prime. Okay, these number P and Q should be prime number, and it should be a large number. Why we use large number? Because with large numbers, there are very big calculations, and it is difficult to decrypt that messages. Okay, large number provides the higher security. Clear? The second step is calculate n is equal to 1 second. साथ साथ में हम इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे. ये स्टेप्स मैं इस साइड लिखता हूं, उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा. First step is select P and Q. P and Q. These should be prime numbers. These should be prime numbers. We select two numbers which are prime numbers. And second step is to calculate n is equal to P into Q. In the second step, we calculate n is equal to P into Q. Okay? And the third step is calculate phi of n. This is the Euler-Tauschent function. This is the Euler-Tauschent function. How to calculate Euler-Tauschent function? Yeah, this topic I already discussed in the last lecture. We will calculate the Euler-Tauschent function. Okay, here calculate phi of n is equal to p minus 1 and q minus 1. This is the formula of phi of n when we have prime numbers. This formula is used when we have prime numbers. All these things I have already discussed in the last lecture. Okay, what is the Euler-Tauschent function? क्या होता है? Okay, what is the function of this Euler-Tauschent function? How we calculate the value of Euler-Tauschent functions? All these topics I have already discussed in the last lecture in very detail. Okay, so इसको उससे चेक कर सकते हो आप. Clear? Next, fourth point is choose value of e. E कोई भी है, इसकी हमने एक value choose करनी है. We have to select value for it, and it should be greater than 1 and less than phi of n. It should be greater than 1 and less than phi of n. This means the value of e that we select between the 1 and phi of n. Clear? And another one thing is e and phi of n. These should be co-prime numbers. These should be co-prime numbers. E and phi of n should be co-prime numbers. This means their GCD
their GCD should be equal to 1. Clear? Co-prime numbers means their GCD E that we have to select, and phi of n, their GCD should be 1. Okay, then they are co-prime numbers. Clear? Next step is calculate. Fifth step is calculate D. Another value we will calculate, that is D. And how to calculate D? The formula is D is equal to D congruence e raised to power minus 1 mod phi n, and DE congruence mod phi n. Clear? DE congruence mod phi n. यहाँ पर 1 आएगा. Okay, in this way we calculate D. And the next step is step number 6, public key. Now we have to make a public key. Now we have to make public key, that is equal to E comma n, and 7th step is private key D comma n. Now for public key and private key we need E and n, and for private key we need D comma n. So that's why we calculate, we choose the value of n for public key, and we choose the value D for private key. And how these values are calculated, E and D, and you can calculate these values like this. Clear? Choose the value of E. E should be greater than 1 and less than phi of n. Clear? And how to calculate D? D calculate by e raised to power minus 1 mod of phi n. Mod of phi n. Yes, Anjali? सर ऊपर का बोर्ड विजिबल नहीं है, 6th स्टेप विजिबल नहीं है. Okay, okay. Clear? These are the various steps to calculate the key generation. How we generate key? We generate a key like this. Clear? First we choose two values. First we select two values, two prime numbers. Sorry. First we select two prime numbers P and Q, and it should be prime. These should be prime number. And second thing regarding P and Q, it should be large numbers, because large numbers provide higher security. Clear? And second we calculate n, or we calculate n is equal to P into Q. Phi of n, that is the Euler-Tauschig function. How to calculate Euler-Tauschig function, that I already discussed in the last lecture. P minus 1 into Q minus 1. And so, this formula is only applicable for prime numbers. This formula only applicable for prime numbers. In the next step, we select a value of E. We select the value of E, and it should be greater than 1 and less than phi of n. Clear? And second thing is E and phi of n. E and phi of n, both these should be co-prime numbers. Both should be co-prime numbers. Means their GCD is equal to 1. Their GCD is equal to 1.
Clear? जिनका GCD 1 होता है, these are the co-prime numbers. And in the next step, we calculate D. Okay? And how to calculate D? The formula is D congruence e raised to power -1 mod phi of n. No, E को इस साइड ले आओ, DE congruence 1 mod phi of n. इसको और भी आप elaborate कर सकते हो, DE mod phi n is equal to 1. Means our aim is this value should be equal to 1. This value should be equal to 1. Okay, now we have here, we make the private key and public key. Private key is equal to D comma n. For this reason we have calculate D because it is needed in the private key, and public key is equal to E comma n. Now let's take an example of this, how to calculate, how to generate a key. So for example, let's take two numbers. For example, let's take two numbers. T is equal to, let T is equal to 3 and Q is equal to 11. Okay, for simplicity I have taken the two small numbers, otherwise these should be very large number. ये बहुत बड़े नंबर होने चाहिए, बिकॉज बड़े नंबर जो है इनकी कैलकुलेशन भी बड़ी होगी और वो हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी. ओके, सो बट इन दिस एग्जांपल आई जस्ट टेक टू नंबर, टू स्मॉल नंबर 3 and 11. क्लियर? स्मॉल नंबर ले कि अच्छे से समझ आ जाए. क्लियर? Let P is equal to 3 and Q is equal to 11. Then the next step is, first step is here we select two numbers 3 and 11. In the next step we calculate n is equal to P into Q. N is equal to P into Q is equal to 3 into 11 is equal to 33. Clear? And the next step we have to calculate Euler quotient function. Euler quotient function. Okay, here P is equal to 3, 3 minus 1. Euler quotient function is equal to P minus 1, 3 minus 1 is equal to 2. Q minus 1, 11 minus 1 is equal to 10. So is equal to 20. So this means Euler quotient function की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 20. So Euler quotient function has 20 वैल्यू. क्लियर? ओके, ये हमने बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर नहीं याद तो आप पिछला लेक्चर जो है उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हो. क्लियर? एंड Euler quotient वैल्यू इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दीज टू नंबर्स with Euler quotient function with n has 20 numbers in the set which have one GCD. 20 numbers in the set which have one GCD. Okay, that is the Euler quotient function. Now the next step is choose value of E. Now we have to choose a number that is E, and this number should be greater than 1 and less than 5 of n. मतलब हमने एक ऐसा नंबर लेना है अब जो कि 1 से बड़ा हो और 20 से लेस देन हो. एंड द कंडीशन इज द नंबर दैट वी चूज should be co-prime with 20. Should be co-prime with 20. This means the number that we choose and 20 give GCD 1. Okay, इनकी GCD क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. So for here I select let E is equal to 7. Now I select here E7 and it is greater than 1 and less than 20, and these two numbers are co-prime numbers. These two numbers are co-prime numbers and their GCD is also 1. So their GCD 7 and 20 is equal to 1. So that's why I choose here E. So that's why I choose here E.
ओके मार्कर ला दे थोड़ा लाइट है हो जाता है ठीक है सो E इज इक्वल टू 7 देयर GCD 7 into 7 and 20 इज इक्वल टू 1 क्लियर सो कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो बट द कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मीन्स दिस नंबर E and 20 should be co-prime numbers okay and their GCD should be 1 clear की कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए अदरवाइज यू कैन टेक एनी नंबर बिटवीन 1 and 20 1 और 20 के बीच में कोई भी नंबर हो और वो नंबर क्या हो को प्राइम हो विद इलस्ट्रेशन फंक्शन एंड देयर जीसीडी शुड बी 1 क्लियर एंड ये स्टेप भी हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट डी नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट डी the formula is DE congruence 1 mod phi of n. Okay, so write down E 7 into D congruence 1 mod phi of n. What is phi of n? That is 20. Now again here we have to choose the value of D and ये वैल्यू इस तरह से चूज करनी है कि जब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का मोड करें तो हमारे पास 1 आ जाए क्यों ये देखो DE mod phi of n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए तो ये दिस इज जस्ट लाइक अ हिट एंड ट्रायल मेथड हाउ टू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ D so if we select the value of D we select the value D in this way their multiplication gives the mod 1 okay 7 into D mod 20 equal to 1 होना चाहिए so here if I take 3 7 into 3 is equal to 21 and 21 mod 20 it gives 1 and this is our condition इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 के इक्वल होनी चाहिए क्लियर यही है ना so DE mod phi of n should be equal to 1 so here we have to select the D in this way the multiplication of E and D give always 1 remainder clear so here I select the value for D 3 वैल्यू फॉर डी 3 तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं डी की वैल्यू 3 सिलेक्ट कर रहा हूं बिकॉज व्हेन 7 into 3 is equal to 21 mod 20 is equal to 1 ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है सो दैट्स व्हाई हियर आई विल सिलेक्ट 3 फॉर डी कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो बट ये कंडीशन होनी चाहिए कि इनका मोड जो है ना मल्टीप्लिकेशन होने के बाद E और D के मल्टीप्लिकेशन होने के बाद मोड करें तो वैल्यू 1 आए ठीक है ना आप कोई और भी D की वैल्यू ले सकते हो बट कंडीशन ये होनी चाहिए ट्रू फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन क्लियर एंड हियर आई विल सिलेक्ट D इज इक्वल टू 3 क्लियर एंड नाउ आई विल मेक द प्राइवेट की एंड पब्लिक की सो प्राइवेट की प्राइवेट की क्या बन गई हमारी D, n D is 3 what is n n is equal to 33 okay and public key E what is E we have 7 n is equal to 33 okay here we have public and private key for encryption and decryption clear okay students clear any doubt okay now the next step is calculate now we will perform encryption and decryption now we will perform encryption and decryption
for encryption, we have a formula C is equal to m raised to power e mod n. C is equal to m raised to power e mod n. Here e and is the e and n is the public key. Clear? E and n is the public key, and m is the plain text. Here m is the plain text, and its value given in the question, and its value will be given in the question. Okay, and m जो हमारा plain text होगा ना, that will be the total number of characters in the plain text. Total number of characters in the plain text, and total number of characters in the plain text, and these should be less than n. These should be less than n. These numbers should be less than n. n से वो क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए letters. For example, if I write A, B, C, D, here total number of characters is equal to 4, and that should be less than 33. That should be less than 33. Okay, the condition is, and C is the ciphertext. C is the ciphertext, M is the plain text, E and N is the public key. Clear? So this is about how we encrypt our message. And for decryption, the formula is M is equal to C raised to power D mod N. Here D and N is the private key, D and N is the private key, and C is the ciphertext, M is the plain text. Okay, यहाँ पर हमने क्या किया? प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट क्रिएट किया. यहाँ पर हम क्या करेंगे? साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट करेंगे इन डिक्रिप्शन. Okay, now let's solve this with these values. Okay, here firstly we perform encryption. In the question, the value for m will be given. इसकी value आपको given होगी, and here we consider m is equal to 31. For example, we consider m is equal to 31. And remember one thing, this value should be less than n. ये क्या होनी चाहिए? n से less than होनी चाहिए. This value should be less than n. Okay, and the condition is satisfied because m that is 31 less than 33. What is n? N we have 33. So m is less than n. Clear? The condition is satisfied. So now we encrypt our message. Okay, here C is equal to M, we have 31, E raised to power. What is E? E, we have 7, comma, mod. What is N? N is 33. Is equal to 31 raised to power 7 mod 33. Now when you calculate this, जब ये calculation करोगे 31 raised to power 7, and then firstly you calculate 31 raised to power 7, ये कुछ ना कुछ value होगी, then mod 33, जो भी value होगी उसका हमने mod 33 कर देना, and it will be equal to 4. It will be equal to 4. So this means ciphertext is equal to 4. हमारा ciphertext क्या आ गया? 4 आ गया. Clear? Now this is how we encrypt our message. Clear? Plain text value will be given in the question. Now put this value here, and E, we have E is equal to 7, and mod of N is equal to 33. Just put the value. Just put these values
for calculation. ठीक है. Now we have cipher text of letter 4 letter का हमारे पास cipher text है. Now after that we will decrypt our message. We will decrypt our message. Here, how to decrypt? The formula is that this is C. What is C? C is the ciphertext, that is 4. Okay. What is D? We have D is equal to 3. Okay. Mod 33. Now, when you calculate this, you will get 31. Whatever the value of 4 raised to power 3, then perform mod 33, then calculate modulus of with the 33, and you will get 31. And this is the value of our plain text. So this means we have converted the cipher text into the plain text. Again, m is equal to 31. Here m is equal to 31. Here our plain text is 31. Here we have to convert this 31. Okay. Now here you can see we have used, here we use public key. Here we use public key to encrypt our message. Here we use public key to encrypt our message, E and N. 7 and 33, that is public key to encrypt our message. Then we have used private key of same user to decrypt that message. For example, here I have used public key of A to encrypt that message, and again here I have used private key of A to decrypt that message. Clear? In this way, we encrypt our message and decrypt our message. Clear? This is about how this is all about RSA algorithm. Okay, once again, I am repeating all the algorithm. For in RSA algorithm, it use the concept of asymmetric algorithm, asymmetric key encryption. Okay, in asymmetric key encryption, we use two keys. One is private key and second is public key. Okay, and in RSA algorithm, we have main 3 steps. The one step is key generation, second step is encryption, and third step is the decryption. Okay, for encryption, firstly we select 2 numbers. Firstly we select 2 prime numbers, 2 large prime numbers. Okay, then we calculate n is equal to p into q, and after that we have to calculate Euler-Quotient function. Okay, Euler-Quotient function, and the next step is to choose the value for E, and the value of E should be greater than 1 and less than Euler-Quotient function, and its GCD with Euler-Quotient number should be equal to 1. Clear? These are the 2 conditions to select the E. Okay, next step is to select the D. For that, we have to select the value for D in this way. When we multiply D and E, and after that we perform mod, that will be equal to 1. That will be equal to 1. वो क्या होना चाहिए? 1 के equal होना चाहिए. ठीक है, इस तरह से हमने D की वैल्यू select करनी है. So here we select the value for D is 3 and E is equal to 7. From these 2 values we have made 2 keys. One is private key and public key. Private key is D comma n, 3 into n. What is n? 33. And public key, what is public key? E comma n means 7 comma 33. Clear? In this way we create our private and public key. And the next step is for the encryption. For encryption we have C is equal to m raised to power E mod n.
here m is the plain text and its value will be given in the question. Okay, now put all the values in this formula. You will convert the plain text into the cipher text. Here for cipher text we have value is equal to 4, m is equal to 31, e is equal to 7 and n is equal to 33. Here we use, for example, we use the public key of A for encryption. Okay, and we get the value that is 4. That is the cipher text value. And after encryption, we will decrypt our message. And for decryption, we have the value m is equal to c raised to power d mod n. Here c is the cipher text, d is the, what is d? D is the private key. Okay, here we put these values. Cipher text has value 4. Clear? 4 power 3 mod 33 is equal to 31. And plain text value also have 31. And when we decrypt our message from cipher text to plain text, it will give raised to 31. So these values are same, okay, as the encryption, as the plain text. Clear? This is all about RSA algorithm. Clear? And if you have any doubt regarding RSA algorithm, कोई topic, कोई step नहीं समझ आया, तो you can ask. Yes, students, raise your hand if you have any doubt regarding RSA. Okay, all clear? Yes. Any doubt? Yes, Aditya Mehra, unmute yourself. Aditya Mehra. Yes, sir. हाँ जी, clear है? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay. Yes, Matesh, unmute yourself. सर ये 7 और 3 कैसे आया, एक बार समझा दीजिए. 7 और 3, okay. अभिनव. सर ये डिक्रिप्शन वाला एक बार रिपीट कर दो लास्ट में से. Okay, okay. ठीक. Anybody else? Okay, देखो हमें दो चीजें चाहिए प्राइवेट और पब्लिक की के लिए. वन इज ई एंड सेकंड इज डी. डी और ई हमने दो वैल्यूज चूज करनी है फॉर मेकिंग द प्राइवेट एंड पब्लिक. ओके, एंड एन वी नीड ई कॉमा डी कॉमा एन फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक की. ओके, हियर वी सिलेक्ट ई इज इक्वल टू 7. क्लियर? And when we have to select the value for E, there is two conditions. One condition is it should be greater than 1 and it should be less than tangent function. Means 1 से ये greater हो और tangent function से क्या हो, less than हो. So here we have selected 7, that is greater than 1 and less than 20. आप और कोई भी वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट वी हैव टू कंडीशंस. वन कंडीशन इज दिस, ई शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन यूलर tangent function. ओके, फर्स्ट कंडीशन इज दिस. सेकंड कंडीशन इज द वैल्यू ऑफ ई एंड यूलर tangent function, दे आर बोथ को प्राइम नंबर. ये क्या होने चाहिए, आपस में को प्राइम नंबर्स होने चाहिए. तो ये 7 और 20 जो है, ये क्या, अगर मैंने 7 सिलेक्ट किया है ना, तो ये 20 के साथ क्या है, को प्राइम्स है. को प्राइम्स क्या होते हैं, देयर जीसीडी विल बी इक्वल टू 1. तो दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है 7, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया 7, अज्यूम कर लिया ई की वैल्यू. हियर आई सिलेक्टेड ई फॉर 7. कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो, दैट विल बी
co-prime with 20 and it should be greater than 1 and less than 20. कोई और नंबर भी ले सकते हो आप, बट वो होना co-prime चाहिए, and there should GCD should be equal to 1. In this way you have to select the value for E. क्लियर? D का भी क्या है कि देखो ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, DE congruence 1 mod phi of n. दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? D. अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? D फाइंड आउट करना है, D नंबर फाइंड आउट करना है। एंड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? द फॉर्मूला इज DE, you can say D is equal to e raised to power -1 mod of phi of n. ओके, अब यहाँ पर क्या है? अब हमारे पास क्या है? नो वी हैव E को हमने इस साइड ले लिया तो वो DE हो गया, DE congruence 1 mod phi of n. ओके, नो पुट दिस, पुट जो वैल्यू है उसको पुट कर दो। Now we have E is equal to 7. We put the value for E 7 into D congruence 1 mod phi of n is 20. Here we put the 20. Okay, the condition is, और इसको और ज्यादा elaborate करेंगे तो we will get ये हो गया। नो ओके, इसी चीज को हमने मोड फाई ऑफ एन को इधर ले गए। नो पुट द वैल्यूज। नो हेयर वी हैव ई इज इक्वल टू 7 इंटू डी मोड फाई ऑफ एन इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 1। नो अब हमने क्या करना, डी की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करनी है कि जब 7 और डी दोनों में मल्टीप्लाई हो तो, और उसको मल्टीप्लिकेशन का जब हम मॉडुलस 20 के साथ मोड करें तो इट विल गिव 1। नो आपको नहीं ऐसा लगता कि अगर वी विल टेक 7 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 21? नो, 21 मोड 20, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इनकी कैलकुलेशन इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए। सो दिस मीन्स 21 mod 20 शुड बी इक्वल टू 1। तो यू कैन कैलकुलेट व्हेन, जब इसको 21 को 20 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1 रिमाइंडर। वो हमें क्या दे देगा? 1 रिमाइंडर दे देगा। तो यही हम चाहते हैं, हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो फॉर दिस रीजन वी हैव सिलेक्टेड 3। ठीक है, इन दिस वे डी एंड ई वी हैव सिलेक्टेड। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिक्रिप्शन। फॉर डिक्रिप्शन वी हैव फॉर्मूला। देखो हम क्या करते हैं, वी प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट बनाते हैं, साइफर टेक्स्ट टू फिर से प्लेन टेक्स्ट बनाते हैं। तो हमने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट बना लिया। अब हमने क्या करना, साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट बनाना है। तो वी हैव टू कन्वर्ट द साइफर टेक्स्ट इनटू द प्लेन टेक्स्ट, एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव फॉर्मूला c raised to power d। c is the cipher text, okay, that is mod of n। okay, जो हमने इंक्रिप्शन की थी तो वी हैव साइफर टेक्स्ट की वैल्यू कितनी आई थी? 4। नो 4 आई थी, 4 पुट द वैल्यू फॉर C here, C की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, पावर 3 mod 33, एंड 4 raised to power 3 किसके इक्वल आएगा? 64। नाउ 64 mod 33 कैलकुलेट करो क्या आता है, एंड इट विल बी इक्वल टू 31 आएगा। 64 का मोड 33 आएगा, सॉरी 64 का मोड क्या आएगा? 31 आएगा। तो हमारे पास क्या था? 31। m की वैल्यू क्या आ गई? 31। m क्या था हमारा? प्लेन टेक्स्ट। तो हमने प्लेन टेक्स्ट जो लिया था वो भी 31 ही लिया था। तो यहाँ पर भी हमारा प्लेन टेक्स्ट 31 आ गया जब हमने उसको साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इन दिस वे RSA एल्गोरिथम वर्क्स, एंड once read it, study it। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। क्लियर? नाउ
प्राइम नंबर कोई भी आप प्राइम नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, पी एंड क्यू की कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। Okay, now you have a first poll. I'm going to launch poll 1 and you have 2 minutes for it. Okay. Yes, students कर लिया सभी ने? Done? Yes, अमानत वीर? सर हाँ जी। सर पोल सेंड नहीं हो रहा, एरर आ रहा है। नेटवर्क चेक करो अपना। ठीक है सर। विदेश अनम्यूट करो। हेलो विदेश। यस सर। विदेश तुम्हारी फीस नहीं आई हुई है मेरे ख्याल से। हाँ जी। Okay, so why we need a message authentication? This also I discussed in the last lecture. What do you mean by message authentication? This means the receiver that received the message. Okay, तो वो क्या होना चाहिए कि हमें वो हो कि वो authentic person से हमें message मिले. For example, if you need any document from me, तो
इफ आई सेंड द डॉक्यूमेंट टू यू, बट वो तब तक ऑथेंटिक नहीं होगा जब तक उसके ऊपर मेरे साइन ना हो, आपके वो मानने में नहीं आएगा कि ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। इसके जहाँ फिर मेरे साइन ना हो, जहाँ कॉलेज की स्टैंप ना हो, जहाँ हेड के साइन ना हो, एचओडी सर के साइन ना हो, ठीक है ना, तो वो हम क्या है उसको वैलिड भी मानते हैं, ठीक है ना। So for that purpose, so message authentication, we need message authentication. Clear? So message authentication क्या होता है? It is the verification that received message came from the genuine source. The meaning of message authentication is to verify that the message came from the genuine source. Clear? एक तो ये चीज हो गई, मैसेज ऑथेंटिकेशन क्या इंश्योर करता है, वेरीफाई करता है कि जो मैसेज आया वो जेन्युइन सोर्स से आ रहा है। क्लियर? सो द सेकंड इज, सेकंड चीज जो मैसेज ऑथेंटिकेशन इंश्योर करती है, दैट इज सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग। सीक्वेंस एंड टाइमिंग, मैसेज सीक्वेंसिंग एंड मैसेज टाइमिंग। देयर शुड बी अ प्रॉपर सीक्वेंस, मीन्स जिस सीक्वेंस में मैसेज सेंड किया गया है ना, उसी सीक्वेंस में मैसेज रिसीवर को रिसीव हो। ये भी इंश्योर कौन करता है? मैसेज ऑथेंटिकेशन ही करता है। एंड नेक्स्ट इज टाइमिंग, मीन्स ऑल द मैसेजेस आर टाइमली बीइंग डिलीवर्ड, या टाइमली वो डिलीवर हो, डिले ना हो। क्लियर? एंड नेक्स्ट थिंग दैट इज इंश्योर्ड बाय मैसेज ऑथेंटिकेशन इज इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। ठीक है? मैसेज ऑथेंटिकेशन आल्सो इंश्योर integrity of the message, or you can say the message ensures that data received are exactly as sent. Clear? Data received at the receiver end are exactly as the sent. जैसे उसको send किया गया उस वैसे ही वो receive हो गया। Means there is no modification in the message, any fake insertion, okay, deletion, all these things. Okay, so this means message authentication verify that the message that we are receiving came from the genuine source. Okay, second thing is message authentication ensure the integrity of the message. Clear? And the next thing is a message authentication also ensure the message sequencing and timing. All these things are performed by message authentication. Clear? So ये about message authentication, and then message authentication requirement. Message authentication requirement. Now in message authentication requirements, see, whenever we want to transfer data over network, clear, and there are a number of attacks that can attack on our data. Clear? It may be the first attack that will be on our data, that is disclosure. डिस्क्लोजर मीन्स रिलीज ऑफ कंटेंट, कि हमारा किसी अटैकर ने हमारा मैसेज रिलीज कर दिया। ठीक है? दैट इज डिस्क्लोजर, दैट इज आल्सो द टाइप ऑफ अटैक। सेकंड इज ट्रैफिक एनालिसिस। Traffic analysis I have already discussed with you in the first lecture in the services. ठीक है? Security services. Okay, in traffic analysis the attacker cannot change